हेलो फ्रेंड्स, हम अपने चैनल लर्न लीगल स्टडीज़ पर आपको LLB, BLLB के सेमेस्टर वाइज सभी बुक्स, बेयर एक्ट, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, प्रोजेक्ट फाइल्स, अन्य सभी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। आज हम इंडियन पेनल कोड देखेंगे। इसका पहला चैप्टर है जनरल इंट्रोडक्शन। जनरल इंट्रोडक्शन में हमारा नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ क्राइम आता है। इसमें आपको इंट्रोडक्शन, definition of crime, distinction between crime and civil wrong, modern approach to crime, ये आपको पहले चैप्टर में आ जाता है जो कि जनरल इंट्रोडक्शन है। जनरल इंट्रोडक्शन से सेक्शंस नहीं स्टार्ट होते, ये हमें पता होना चाहिए। एलिमेंट्स ऑफ क्राइम भी है, पर इसमें सिर्फ हम नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ क्राइम देखेंगे। इंट्रोडक्शन. It is true that both crime and criminal are looked upon the greatest hated by all sections of the pupilist society, but it is also true that the study and research of law of crime has always been one of the most attractive branches of jurisprudence since the early year of human civilization. In fact, the law of crimes has been old as a civilization itself, where the people organized themselves into group of association. The need of some sort of rules regarding the behavior of the members of the group into the has been left, and the where their rules of society its infraction was individual, and there lies the necessity of devising some ways and the variation its rules. However, the problem arises as to what act should be forbidden or what act should be selected for punished by the society or the state. In other words, what act should be declared as crime. ये इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन का बहुत बड़ा हिस्सा है, पर इतना आपको कम से कम एग्ज़ाम में तो लिखना ही होता है, क्योंकि इंट्रोडक्शन से ही हमें 2 या आधा मार्क्स तो मिल ही जाता है। According to Terence Morris, crime is what society says crime be, establishing that as act is voluntary of the crime of law. Without the law, there can be no crime at all, although there may be moral indication which rules its law being enacted. Definition of crime पे आ जाते हैं। Definitions of crime ये है। Crime is defined an act punishable by law as a forbidden by state or injurious to the public welfare. It is a very wide definition. Anything which is injury to public welfare is a crime in modern complex society. Many things may be against the public welfare: selling content food, molestation of young children or women in railways, trains, and misleading advertisement. Any all these are the injuries of to public welfare. इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, ऑस्टिन का एक बार आप पढ़ लेना, बाकी मैं आपको लिख करके बता ही देती हूँ। Thus, according to Austin, in case the civil wrong, the state does not interfere until the wrong has been committed and proceedings are intended by the injury party or by some other person acting on his behalf. In case the criminal of wrong proceeding can be instituted by the serving or all along. There are many cases of crimes under the Indian Penal Code where prosecution cannot be launched unless a complaint is made by the aggrieved party. It is only in case of serious crime that the state may on its take action to punish the wrongdoer by intention of criminal proceedings in its own name. For example, in case of adultery under section 497 or criminal elephant under section 498 of the Indian Penal Code, a complaint by the person aggrieved in necessary to court shall taken of the offence under the sections unless a complaint is made by the husband of the victim of women. Next, definitions.
बेसिकली डेफिनेशन के नाम से भी ये क्वेश्चन आ जाता है। फिलहाल हम देखते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन क्राइम एंड सिविल रॉन्ग। इस बीच में इनको डेफिनेशंस भी देने पड़ जाते हैं। सिविल रॉन्ग क्या है और क्राइम क्या है। क्राइम हमने पहले देख ही लिया है। इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी बताने को आ जाते हैं। बेसिकली आप इतना ही हिस्सा इसका पढ़ लोगे तो इसमें से छोटे छोटे करके सारे पार्ट्स आप खुद ही भी निकाल लोगे। इसको एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मॉडर्न अप्रोच टू क्राइम। The basis of criminal law is that there are certain standards of behavior of moral principle which society requires to be observed, and the breach of them is an offense not merely against the person who is injured but against society as a whole. Be, be in reality and offense against only one specified person. Thus functions of criminal law as fertility by the Wolf and Dunn committed by report 1958. It is preserve public order and dignity of project citizens from what is offense of injury, and to provide sufficient safety guard against exploitation and cooperation of other, particularly those has young, weak body, mind, expression, and individual from injury, anyone, corporation, and explanation and moral without which people cannot live together. Society cannot ignore the morality of the individual any more than it is can his loyalty. It flourishes or the both, and without either it dies. ये मॉडर्न अप्रोच है। इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, इसको आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैं संडे टू संडे हाँ हम क्वेश्चन आंसर का एक आपको वीडियो देंगे जिसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होंगे। और जितना भी मैंने इस वीडियो में ये आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया है, ये सारा इसी से रिलेटेड मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर दूंगी, जिसमें से 10 में से 5 तो आते ही हैं क्वेश्चन पेपर। थैंक यू।